A very good morning, dear students. I hope you all are well. So, today I'll teach you realization account. See, students, we have already discussed the meaning of realization account in my previous video. So, I'll give you a brief detail of the realization account. See, students, realization account means now this is the time to realize all the assets and to pay off all the liabilities, right? So, whatever will be left with the partners, they'll distribute it. ओके सो रियलाइजेशन अकाउंट का मीनिंग है जितनी भी एसेट्स है सबको बेच दो और जितनी भी लाइबिलिटीज है सबको पे कर दो. व्हाई? बिकॉज इन आवर चैप्टर नंबर 8 डिसोल्यूशन ऑफ फर्म वी आर जस्ट क्लोजिंग आवर बिजनेस, राइट? इफ यू आर क्लोजिंग आवर बिजनेस इट मीन्स जो भी हमारे पास है वो सब कुछ हम लोग बेच देंगे और जिसको हमने पैसा देना वो लोग हम उनको पे कर देंगे, राइट? सो सी how to make realization account. So this is an account, so this will be prepared in a T format, right? Two sides are there, debit and the credit side. A very simple format is there, particulars amount, right? Now see how to make it. Firstly students, you have to take the balance sheet that is given in the question. आपको क्वेश्चन में क्या है, एक बैलेंस शीट दी होगी जिसमें आपको एक साइड में एसेट्स दी होंगी, एक साइड में लाइबिलिटीज दी होंगी. व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू टेक ऑल द बुक वैल्यूज ऑफ दोज एसेट्स एक्सेप्ट कैश एंड बैंक. See students, because we are selling our assets in order to receive cash, लेकिन कैश और बैंक तो ऑलरेडी कैश की फॉर्म में है. So there is no need to record these two balances in realization account, right? जो assets को हम लोग बेच सकते हैं, only those transactions, only those assets we will take in realization account. So what you have to take, you have to record all the assets with their book values. For example, in the balance sheet it is given that there is a building of rupees 2 lakh, so you will write here 2 building 5 lakh. There is a stock of rupees 50,000, you will write here 2 stock amount 50,000, right? So this is how you have to record all the assets except cash balance and bank balance. So on the credit side you have to write down the book values of all the liabilities except partners capital account, right? Then reserves, because reserves are also there in the form of cash, so we will not take it, right? So partners capital account, reserves and personal liability of any partner. See why I'm just writing here the personal liabilities, because students in realization account firstly we will pay all the outside liabilities. Outside liabilities you can say that creditors, right? Outstanding expenses, okay? If there is any loan of partner spouse, means if suppose partner Mr. A and B, two partners in a partnership firm, मिस्टर ए की जो वाइफ है उसने लोन लिया तो दैट इज कॉल्ड आउटसाइड लाइबिलिटीज. सपोज यू हैव टेकन लोन फ्रॉम बैंक, सो दैट इज आउटसाइड लाइबिलिटीज. सो रियलाइजेशन का मेन फोकस क्या होता है, पहले आउटसाइड लाइबिलिटीज को पे करना, उसके बाद अगर कुछ बचेगा तो वो उनकी पर्सनल जो लाइबिलिटी है, मीन सपोज ए ने लोन दिया है फर्म को या ए ने लिया है लोन फर्म से, राइट? दैट वी विल कंसीडर लेटर ऑन. फर्स्टली वी विल पे ऑफ ऑल द आउटसाइड लाइबिलिटीज. ओके, सो हमने सारी लाइबिलिटीज को लेना है. बिल्स पेबल भी हो सकता है वहां पे, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, राइट? सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ आउटसाइड लाइबिलिटीज एंड यू हैव टू राइट डाउन द अमाउंट in the amount column, right? Now what is the next step? Now you have recorded all the book values of assets as well as the liabilities. Now this is the time to realize all the assets and pay off all the liabilities. See students, whenever you have to realize your assets, you have to write by. Suppose you are realizing building, so you have to write here by bank or cash, right? So जो भी एसेट्स हम लोगों ने रियलाइज करी है ना, सिर्फ वही एसेट्स को हमने बाय बैंक में लिखना है. सपोज करो इन द बैलेंस शीट देयर आर 5 एसेट्स बट वी आर रियलाइजिंग ओनली 2, देन यू हैव टू राइट डाउन ओनली दोज 2 एसेट्स ओनली, राइट? बाकी की हमने नहीं लेनी. सपोज मैंने अभी आपको कहा वी हैव सोल्ड बिल्डिंग, तो बाय बैंक लिख के यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दोगे बिल्डिंग.
हमें पता लग जाएगा कि हमने बिल्डिंग को सेल कर दिया है। एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ और है, आपकी एसेट कितने की थी और आप उसको कितने में बेच रहे हो डजेंट मैटर। फॉर एग्जाम्पल, सपोज द बुक वैल्यू ऑफ बिल्डिंग सेज इन द बैलेंस शीट इज 5 lakh, बट हियर यू आर रियलाइजिंग इट in rupees 4 lakh, then you have to write here 4 lakh, not 5 lakh. मीन्स जितने की वैल्यू है वो नहीं फर्क पड़ता, कितने का पैसा आप लोग रिसीव करो आफ्टर रियलाइजेशन, इट मैटर्स। ओके, तो अब जितना भी पैसा रिसीव करोगे उसको बेचने के बाद, दैट यू हैव टू रिकॉर्ड on the credit side, and you have to write by bank or cash rupees, whatever you are receiving cash, right? Similarly, you have to record all the assets which you are realizing by bank or building. So suppose we are also realizing stock for rupees 30,000, right? Here stock 30,000, right? Now one thing I just want to make it clear, अगर आपको 2 से ज़्यादा चीज़ें दी हैं, right, you have to just, you are passing the compound entry for that, then prefer करो कि इसको internal column में लिखो। suppose ये 4 lakh था, ये 30,000 था, तो 4,30,000 आप क्या करो, उसको अपने आउटर कॉलम में शो करो कि बैंक जो है हमारे पास टोटल आया 4,30,000, आया कैसे है, बिल्डिंग 4 lakh स्टॉक 30,000, राइट। नाउ दिस इज हाउ यू हैव टू रियलाइज योर एसेट्स। नाउ सपोज देयर कोई पार्टनर, सपोज ए एंड बी आर 2 पार्टनर्स, सपोज एक फर्नीचर है दैट इज टेकन बाय मिस्टर बी, जो आपका पार्टनर है बी, वो अपने घर ले गया, तो हियर यू विल राइट बाय बीज कैपिटल अकाउंट, बिकॉज उसने क्या टेकन ओवर करा है, स्टॉक, राइट। नाउ इन व्हेन वी विल मेक बीज कैपिटल अकाउंट, तो हम वहां से वो पैसा डिडक्ट कर लेंगे जितने का भी हमारे पास फर्नीचर था। we will write here furniture, right, amount we will write on the outer column. So this is how we have to record all the assets. Now come to the liabilities. Now students, whether any information is given in the question that we have paid the liabilities or not, this is the compulsion to pay off all the outside liabilities, right? Suppose the question is silent, that whether we have paid money to the creditors, whether we have paid for outstanding expenses, whether we have paid for our bills payable or not, you have to pay. So this is the you can say that the liability of the firm to pay all the outside liabilities first, then to distribute the balance whatever will be left with them. So आपने liabilities को कैसे pay off करना है, here you have to write down to bank or cash, and you have to write down here creditors, right, then bills payables, then outstanding expenses. Again write the columns in the inner column, write the balances in the inner column, and write down the total balance in the outer column in front of bank or cash, right? So we have to record the realization of assets if it is given in the question. अगर दिया है तो आप रियलाइज करेंगे, अपनी मर्जी से नहीं करना, लेकिन लाइबिलिटीज के केस में ऐसा नहीं होता। लाइबिलिटीज के केस में whether it is given in the question or not, you have to pay off all the liabilities. Now if you have paid any expenses of realization, then you will write here to bank, in the bracket you will write realization expenses. Is that okay? So this is how you have to realize your assets, and you have to pay off all the liabilities. Now make total of your sides, make total of credit side as well as debit side. If your credit side is greater than the debit side, it means you are having profit. So that profit will be transferred to partner's capital account. But if your debit side is greater than the credit side, then you are having loss, right? Then you will transfer this loss to partner's capital account. Okay, so this is how you have to find out the balances of profit and loss that is to be transferred to partner's capital account, or that is to be shared among the partners, right? And this is how you have to pay for the liabilities, and you have to realize money by selling your assets. Okay, so do practice of this. You can try your questions that are given in the in your book related to realization account. So please send me your queries. Thank you so much.